Assalamu alaikum and welcome to lecture number 12 for the course of Corporate Social Responsibility MGT610. Today we're going to start a new chapter, which is chapter number 4. Now chapter number 4 is about roles of various institutions in the concept of corporate social responsibility. What we've done so far in the first 3 chapters of your books is that we've discussed what corporate social responsibility is. We've discussed why CSR is important for the company. We've discussed what role should government and other stakeholders should play with respect to the activities of corporate social responsibility. And we've generally given you an idea as to why corporate social responsibility is important today for corporations and businesses. We've also discussed the stakeholders theory as well, and we've discussed various other philosophies जो कि involved होती हैं with respect to companies, with respect to profit making, with respect to making money, with respect to distributing it among society. So these are the things that we've discussed so far. Today we're just going to talk about the role of various different institutions with respect to corporate social responsibility. That is chapter number 4 of your books. What are the learning objectives? We would want you to understand that CSR is integral to the development process. So the very first objective, or the very first learning objective of this chapter is that you as students, as future managers, as future entrepreneurs, need to be very clear in your mind, need to understand that CSR plays a very, very important role in the development process. You would by now, you should have an idea of this particular point as well. अब तक हमने जितने पहले 3 chapters पढ़े हैं, आपको एक बहुत clear idea ज़रूर हो गया होगा कि why corporate social responsibility is important in developmental work. The second learning objective is that you should understand the role of the major institutions of the civil society in corporate social responsibility. So what role does civil society institutions have with respect to CSR? That is what we're going to do in this chapter as well. Create awareness of certain institutional initiatives in progress and the need for further contribution in the field. So we're just creating awareness as to what are the various initiatives, progress initiatives that companies have taken, that institutions have taken, and then we will also talk about as to the further progress that these institutions are making, these companies are making. वो आगे के लिए क्या काम कर रहे हैं CSR को promote करने के लिए, CSR को implement करने के लिए, and एक general awareness create करने, CSR के बारे में create करने के लिए आपकी जो institutions हैं, आपकी civil society institutions हैं, आपकी corporations हैं, आपकी companies हैं, वो सब क्या कर रही हैं. Now, I guess that is about the learning objectives. और इसके बाद से from this slide onwards we're starting our chapter number 4. Now, whatever we've talked about, whatever we're doing today in 2012, it brings to the forefront the human aspect of development. Companies क्यों काम करती हैं? Why do you as an individual work? Why am I working? Why do people around you go to offices? Why do they have their own businesses? Everything that we do is for human development. हर चीज़ में जितनी भी development है, whatever development has been taking place in this world, उसका एक human aspect होता है. एक तो aspect यही कि जो हमने पहले भी बात की कि जी, remember when I gave you an example कि जिस बंदे ने आपका liquid bomb बनाया था, that person is also very intelligent. That person is also that person is a genius maybe, right? But क्या उसने जो चीज़ बनाई उसकी कोई value है? नहीं, right? It has a negative value associated with it. Meaning कि knowledge वही होती है जो एक ऐसी चीज़ produce करे जिसकी value हो. And when I say value, basically whatever is being produced in the world is supposed to make the lives of human beings easy. It is supposed to help people make their lives very, very easy so that they can do so many other things. So basically, आप जब भी development की बात करते हो, उसमें human aspect बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Because अगर development में human aspect नहीं होगा, तो उसको आप development नहीं कहेंगे. So when I gave you an example of a person who made the liquid bomb, उसमें development या human development का aspect नहीं था. And that's the reason that when we were discussing that, we said कि नहीं जी, since उसमें human development का aspect नहीं था, वो
ह्यूमन एग्जिस्टेंस को नेगेट कर रहा था, इट वॉज बीइंग यूज्ड टू नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स, तो उस केस में वो जो है वो नॉलेज नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ब्रिंगिंग वैल्यू इनटू दिस वर्ल्ड, इट इज नॉट ब्रिंगिंग थिंग्स which can make the lives of people easy. It's just making lives of people miserable. Now, this reminds the professionals that they are people first and therefore human relations have to be managed effectively. Now, since आपकी जितनी भी development हो रही है उसका human aspect बहुत important है और आपको development के human aspect को देखना है. So, if you're developing your business, if you're developing your company, you need to see that whatever activities that your business is doing, whatever activities that your business is indulging, क्या उसका negative impact इंडिविजुअल्स या ह्यूमन बींग्स पर पड़ रहा है, और अगर नहीं पड़ा देन यू गो अहेड विद इट, और अगर पड़ा है देन यू थिंक हाउ डू आई रेक्टिफाई इट और हाउ डू आई मिनिमाइज इट. सो एवरीबडी दैट यू मीट, चाहे वो मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, सीईओज, जितने भी लोग हैं, each one of them is a human first, is a person first, and therefore आपका human relation जो है वो बहुत importance gain कर लेता है, and therefore आपका human relations को properly, effectively manage भी करना चाहिए. And then again, when I'm saying human relations, it's not just human relations or interacting with people within your organization. Human relation is also going to involve interacting with people who are outside your organizations as well. So anybody who's your stakeholder, your society, your communities, your customers, your suppliers, जो भी company के बाहर है और जो भी company के अंदर है, one needs to maintain good relations with each one of them. Now, development, as I said earlier as well, cannot be unidimensional. It cannot be कि जी सिर्फ एक पार्टी को बेनिफिट मिले. डेवलपमेंट एक ऐसी चीज होगी, ये डेवलपमेंट को अगर आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल. उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत लोगों को, बहुत कम्युनिटीज को, बहुत ग्रुप्स को फील होने चाहिए. अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट है जो कि सिर्फ लेट्स से कि बिजनेस हैज मेड अ प्रोडक्ट विच इज ओनली बेनिफिटिंग द बिजनेस, विच इज ओनली ब्रिंगिंग प्रॉफिट्स फॉर द बिजनेस ओनली, उस केस में आपकी डेवलपमेंट फायदेमंद नहीं है, उस केस में आपकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, एंड उस केस में आपकी डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल है. बट देन दैट डेवलपमेंट इज नॉट गुड. फॉर डेवलपमेंट टू बी गुड, इट हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल. इट हैज टू अफेक्ट a lot of people, it has to affect a large group of people, it has to affect the society in general. That is why we say that जो भी development होती है वो multi dimensional होती है. आप अगर आप negative की बात करें, let's say कि if somebody is building फैक्ट्री और वो ट्रीज काट रहे हैं और आपका नेचर को खराब कर रहे हैं, उस केस में भी आपकी उस डेवलपमेंट के भी मल्टी डायमेंशनल नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, बिकॉज आपकी ट्रीज कटेंगी, आपके इकोसिस्टम पर प्रॉब्लम्स होंगी, आपके ऑक्सीजन लेवल्स फर्क पड़ेंगे, आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वट एवर डेवलपमेंट यू डू, बी इट पॉजिटिव और बी इट नेगेटिव. आप एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, एट सम पॉइंट इन टाइम इफ यू वांट टू यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, जस्ट इमेजिन how much devastation that's going to bring. आज आप हिरोशिमा की बात करते हैं, they've used an atomic bomb. People are still facing issues with after even so many years. So the point is that whatever development that a company does or whatever development a company undertakes, it would have, चाहे वो कैसी भी डेवलपमेंट हो, इट वुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट. पॉइंट इज कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो कॉरपोरेशंस डेवलपमेंट कर रही हैं, दे ब्रिंगिंग इन बेटर प्रोडक्ट्स, ब्रिंगिंग इन न्यू मेडिसिन, रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है, इनोवेशन इतनी ज़्यादा है. वट एवर डेवलपमेंट दैट दीज कंपनीज आर doing, it should be ensured that all of that positively influences the environment, the society, the cultures, the communities, because development would always be multidimensional and not unidimensional. Matrix of relationship based on trust needs to be developed. Now जब आप development की बात करेंगे और आप human relation की specifically बात करेंगे, because आप development की बात करते हैं तो human relation का aspect उसमें आता है. जैसे ही human relation का aspect आएगा, when two people would start interacting with another, automatically आपका trust की development की बात आएगी, because two people cannot interact with each other without the element of trust. If there is no trust, then that association is not going to be a good association. On the other hand, if there is trust, अगर दो लोगों के relationships में या multiple लोगों के relationships में trust का element है, तो automatically आपकी relationship जो है
वो बहुत बेहतर हो जाती है. Now, where would all these 4 points relate to corporate social responsibility? Again, जब हम रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशंस और ट्रस्ट की बात करते हैं, ये रिलेशनशिप सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होते, कॉरपोरेशन और कस्टमर्स के बीच में भी होते हैं. व्हेन आई बाय अ नेस्ले प्रोडक्ट, आई ऑटोमेटिकली ट्रस्ट दैट दैट नेस्ले प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ गुड क्वालिटी, will be reasonably and or rightly priced, and it will not harm the health of my family members. So that's the trust that I have on Nestle company. Similarly, जब आप corporate social responsibility की बात करते हैं, so when I purchase a product, I automatically assume that whatever Nestle is doing, it's going to be ethical. Whatever products they're making, they're going to be right products. Whatever they're doing, they're not going to negatively impact the environment or the society. So again, जब भी आप corporate social responsibility की बात करते हैं, उसमें trust का element again उतना ही important होता है जितना दो individuals के बीच में trust का element होता है. CSR signifies the concept that it is better to have a shared interest in a successful development process than to dominate a failed, dissatisfied socio-economic structure. Therefore, the role of major institutions in the CSR process needs to be analyzed and understood. So, corporate social responsibility basically says कि जी पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर शेयर्ड इंटरेस्ट होंगे तो इट इज गोइंग टू बी बेटर. एंड रिमेंबर, जब हमने बात की थी कि जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी can be expensive in the short run, but when you are looking at a company in the longer run, and when you're looking at the company which is involved in corporate social responsibility, let's say 10, 15, 20 years down the lane, the research says that that company which is involved in corporate social responsibility is going to be more profitable, is going to be a much more successful company as compared to that company which is not involved in corporate social responsibility. So keeping that particular thought in mind, we say कि जी पूरा जो development process होता है किसी भी company का, from idea generation to let's say maybe bringing the product in the market and actually selling it, इस पूरे development process में आपको अपने सारे stakeholders के interest को देखना पड़ेगा. Now that is not an easy task. Just imagine कि if you would have your entire family in one room and you're just discussing कि जी मैंने बाहर खाना कहाँ खाने जाना है. Do you see कि कितना conflict आता है? Somebody wants to go to McDonald's and there's another who wants to go and have Chinese, and there are two people who want to eat Pakistani. एक सिर्फ for the issue of where should I go and have our dinner, or where should we as a family should go and have our dinner, आपको इतनी resistance आती है. इधर हम एक कंपनी कॉर्पोरेशन बिजनेस की बात करें जिसमें multiple hundreds of people are employed in that organization, and पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में इट्स नॉट अ वन डे और अ फ्यू आवर्स एक्टिविटी, मल्टीपल डेज, मंथ्स, ईयर्स लग रहे होते हैं. पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में अगर आप अपने स्टेक होल्डर्स से पूछेंगे जी आपको क्या चाहिए, ईच स्टेक होल्डर वुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स, वुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ वांट्स. हैविंग सेड दैट, इट इज स्टिल important that you understand the needs, the wants and the requirements of your stakeholders and try to incorporate as much of those in your development process, so that what you have is that you have a shared interest. Everybody then would, जब आप सबकी requirements को incorporate कर लेंगे अपने development process में, then all the stakeholders would want that development process to succeed, would want that development process to proceed, and automatically आपका जब development process सही चलेगा तो automatically आपके stakeholders की requirements, needs and wants भी पूरी हो जाएंगी. Now this is one idea. इसके ऑपोजिट क्या है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचे, रेवेन्यू मेकिंग के बारे में सोचे, प्रोडक्शन के बारे में सोचे और सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे, एंड बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को साइड पर रख के it does not look after the interests of the stakeholders. Now when that happens, then what you have is a dissatisfied socio-economic structures, and that is what we see around us. कि जी some people have it, most of us don't have it. Some people आपको then you have poverty issues, you have education issues, just because कि आपकी corporations and companies have a single point agenda in mind, वो unidimensional आगे चल रही होती हैं, and all that they're concerned with is profit making and nothing else. So what is important today
today with respect to corporate social responsibility is that companies today need to think in terms of having shared interest in a successful development process rather than a domination focused activity which is going to result in dissatisfaction and which is going to result in an unhappy socio-cultural structure or socio-economic structure. Therefore, the role of major institutions in CSR needs to be analyzed, because in order for कंपनीज टू इंश्योर कि सब स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट मीट हो, आपको बहुत जगहों से हेल्प चाहिए होगी. उसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का, मल्टीपल एंटिटीज के रोल्स होंगे जो कि आपके स्टेक होल्डर्स को गाइड करेंगी और सही रास्ते पर गाइड करेंगी. नाउ the institutions actually जो हम बात करेंगे which is going to guide the CSR activities towards the right direction, those institutions basically act as check and balance for each other, because अगर सिर्फ एक institution होगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा power आ जाएगी. अगर सिर्फ एक institution होगा तो उसके पास enormous authority आ जाएगी. And when one institution has enormous authority and enormous power, automatically misuse of authority and misuse of power के issues आ जाते हैं. But when you have multiple institutions who would have similar or identical objectives, which is promotion of corporate social responsibility and ensuring that businesses are in line with corporate social responsibility activities, then those multiple institutions are going to keep a check and balance on each other. Now, before I explain this point further, let's just see what those institutions are. Now, the institutions that we've been talking about are the government, or the non-government or the non-profit organizations. You have the educational institutions and the media. So these are the four different types of institutes that we're going to discuss, and we're going to discuss their role in terms of how they are affecting the activities under corporate social responsibility. And we're going to analyze their roles, we're going to discuss them and see कि जी उनका क्या impact होता है businesses पर, और हम ये भी discuss करेंगे कि इन चारों institutions का corporate social responsibility को promote करने में how they're helpful and how they're not helpful. Now, having said that, let's just go back and just discuss कि जी when I say कि all these four institutions keep a check and balance on each other, how do they do that? For example, आज अभी पाकिस्तान की आप example ले सकते हैं. Whatever the government is doing, the media is keeping a check on that, because जैसे government ज़रा सा अपने एजेंडा से हिलती है, the media आपके breaking news, government ने ये कर दिया, parliament ने ये कर दिया, which keeps a check on the government that whatever they're doing, because the government feels that they're under a magnifying glass, और magnifying के glass में तो आपका ज़रा सी गलती बहुत बड़ी बन सकती है, so automatically the government tries to keep in line with things. Similarly, आपका non-government institutions and not for profit organizations जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट पे चेक रखती हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर आपका मीडिया चेक करा होता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपकी एकेडेमिया जो होती है, दैट्स आल्सो कीपिंग अ चेक ऑन द मीडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट these four different entities are doing is they're not only ensuring that the CSR activities are being promoted, they're not only ensuring that businesses do their business keeping in line, or businesses do their operations keeping in line with the corporate social responsibility activities. These four institutions are also keeping a check on each other as well, so that none of these entities, none of these institutions अपने domain से बाहर आए, बहुत ज़्यादा powerful ना बन जाए, बहुत ज़्यादा authority इनके पास ना हो. So now these institutions, that means, and they play an extremely important role in the promotion of corporate social responsibility. और जो ये role है ये two फोल्ड होगा. एक, वो कंपनीज को चेक एंड बैलेंस में रखती हैं, और दो, within these four they're keeping a check and balance on each other, so that उनके पास unbridled authority ना हो, ऐसी power ना हो जिसको वो misuse कर सकें, because you need to have a check on each other so that you remain within your limits, you remain within your domain, and that is the reason that all these four institutions keep a check and balance on each other. Now, the very first thing, or the very first entity that we're going to discuss today is the role of government in promotion of corporate social responsibility. We're going to discuss the role of government with respect to how does the government ensures that businesses do their operations keeping in line with corporate social activities, or keeping ethics in mind.
Now, in spite of growth, globalization, no progress in addressing human issues. You need to understand now, government का role हम discuss करेंगे, but first we need to understand the entire scenario, and first we need to understand the entire situation. Now, globalization हो रही है, growth हो रही है, everything, countries are utilizing each other's resources with respect to production, with respect to productivity. A lot of things are being made in China because it gives you inexpensive labor. और आपका the entire globe is literally what we call as a global village. Everybody is interconnected और आपकी interdependencies जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं. Having said that, हम ये भी कहते हैं कि आपकी companies, multinationals हैं, they have operations in so many countries, they're doing so much, उनकी production capacities बढ़ गई हैं, consumer base बढ़ गई है, आप इतनी ज़्यादा sales and revenues हो रहे हैं, but question is कि क्या human issues address हो रहे हैं, क्या poverty alleviate हो रही है, क्या environmental degradation कम हो रही है, क्या ozone layer की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, क्या education या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कंपनीज काम कर रही हैं. That's a big question mark for a lot of people. So yes, in spite of growth, in spite of globalization, human issues are not being addressed. Instead of ensuring holistic growth, there is a division of haves and have-nots. Now, what is holistic growth? Holistic growth is that companies should grow, economies should grow, countries should grow, but while they're growing, everybody who's associated with these companies should benefit from them. For example, when I say ki holistic growth of a company, the holistic growth of a company is, yes, the company is being profitable. Holistic growth is, yes, the company is earning revenues, it's expanding, it's opening more factories, it's opening more branches domestically as well as internationally. But if they are ruining the environment, if they are intoxicating the rivers, if they are polluting the air, then that is not holistic growth. Holistic growth is कि आप इस तरीके से grow करें कि आपके जितने stakeholders हैं. Remember when we talked about the taxonomy of stakeholders, हमने कहा था कि जी आपके primary social, secondary social, primary non-social, secondary non-social होते हैं. You need to keep the interest of everybody in mind. आपकी growth should not negatively impact any other entity or any other stakeholders group. अभी क्या हो रहा है कि हमारी ग्रोथ तो हो रही है, कंपनीज तो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही हैं, कंपनीज तो प्रॉफिटेबल हैं, बट द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु हैव थिंग्स एंड पीपल हु डू नॉट हैव थिंग्स इज ग्रोइंग वाइड. सो आपके हैव्स और हैव नॉट्स में, रिच और पुअर में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है. अगर proper, in the true sense of the word, if there would have been holistic growth, then the difference or the gap between the haves and the have-nots would not have increased so much. आप अपनी distribution of wealth जो है वो properly अगर करें तो फिर ये काम नहीं होता. Now, once that has happened, that the difference or the gap between the haves and the have-nots have increased because of unholistic growth, it pressurizes the government to intervene and to ensure justice. So जब आपकी holistic growth नहीं होती है और haves and have-nots में differences आ जाते हैं, gaps जो है haves और have-nots से gap बढ़ जाता है, that particular situation pressurizes the government to intervene. It sort of compels the government to intervene and to ensure justice, because basically government क्या है? Government is basically something which has been elected by the people, which is supposed to work for the betterment of the people. And basically जो आपके लोग government में होते हैं, they're basically representative of the people. So जब आपके लोगों के साथ भलाई नहीं हो रही होती है, लोग आपके benefit नहीं कर रहे होते growth से, people then start putting pressures on their representatives that you should do something about it, and then automatically the electives जो होते हैं या representatives जो होते हैं वही आपकी government होती है. So basically आपका government पे pressure आ जाता है कि they should intervene and ensure that there is justice and there is fairness in whatever is happening in that particular society. Now, balancing between autocracy and democracy is the real challenge, and CSR can be used to create this balance. Now, जब आप government को कहते हैं कि जी intervene करो, and when you ask the government to come in and ensure justice and ensure fairness and ensure that everybody gets what they deserve,
देन गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट में अगेन ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात है। ऑटोक्रेसी इज मोर अथॉरिटी ओरिएंटेड, या आप कहते हैं कि सिर्फ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वन मैन मेकिंग ऑल डिसीजंस। ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड वर्किंग in the interest of the people, right? That is what democracy and autocracy is, and both of them are basically opposite of each other. Autocracy अगर इधर है तो democracy इधर है। यहाँ पर एक बंदा decision लेता है, यहाँ पर public representatives जो हैं वो decision making करते हैं। Both अगर हम देखें autocracy not considered right, आप समझते हैं कि एक बंदा सिर्फ काम नहीं कर सकता, आप वो अथॉरिटी के बेस पर, पावर की बेस पर लोगों पर रूल करता है और लोगों पर अपनी अथॉरिटी जो है वो जमाता है, एंड वी थिंक दैट इज रॉन्ग। ऑन द अदर हैंड अगर डेमोक्रेसी होगी विच इज नॉट गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय इंडिविजुअल्स, बाय एंटिटीज, बाय ग्रुप्स, देन ऑटोमेटिकली आपकी डेमोक्रेसी की जो एक्सट्रीम है या अनब्रिडल्ड डेमोक्रेसी है जिस पर कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे, वो भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग government and when we were talking autocracy and democracy, CSR then again plays a very important role to balance these two extremes कि जी हम autocratic की भी बात नहीं करें और हम डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन विद इन डेमोक्रेसी हम रूल्स, रेगुलेशन, कोड्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी डन सिस्टमैटिकली, एवरीथिंग हैज टू बी डन यूजिंग अ सिस्टम, एवरीथिंग हैज टू बी डन यूजिंग अ प्रोसेस, एंड व्हेन यू यूज प्रोसेस एंड व्हेन यू यूज सिस्टम, ऑटोमेटिकली आपकी डेमोक्रेसी जो होती है वो इतनी रेगुलेटेड हो जाती है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी कम होंगी, करप्शन भी कम होगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव्स भी ज्यादा होंगे, एंड ऑटोमेटिकली the same positive energy is going to flow down, trickle down to every aspect of the society, चाहे वो individuals हो, चाहे वो corporations हो, चाहे वो businesses हो. Now the government should accept moral responsibility for the well-being of their citizens. I just told you, when I sign or when I put a tick in front of a political party sign and I give my vote to that political party, and when that party wins and forms a government, it becomes the moral duty of that particular government to take care of my needs, to take care of my wants, to take care of my requirements. जो चीज़ मुझे चाहिए है. Now when I say needs, wants and requirements, I don't say that if I want a BMW or if I want a Mercedes, तो government को मुझे provide करने चाहिए. हाँ, लेकिन food, shelter, clothes, things that I can afford, electricity, आपकी सुई गैस, these are the basic necessities that are needed for my existence, and it becomes the moral responsibility of the government for which I voted. उसकी responsibility बनती है कि वो अपने citizens को, अपनी society को ये सब चीज़ें जो हैं effectively provide करे और efficiently provide करे. Now अगर आप historically भी देखें governments को, you go back in time, you will see that those kings and those empires have flourished, or those kings and those empires have been considered very important, जो अपने citizens, अपनी societies को बेहतर करती थी. So those kings have been famous who have taken care of their countries and their citizens and the society. Similarly, those empires, उनके जो नाम हैं, their names have been written in golden words in history, who have taken care of their people, who have taken care of the society. So again, जो हम कहते हैं ना कि जी government की moral responsibility है to take care of the society, आपकी history भी आपको back करती है. It provides you proof that only those kings and only those empires have succeeded or only those kings and only those empires are famous who have taken care of their people. So governments के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लोगों का, अपने citizens का ख्याल रखें, उनकी needs, उनकी requirements को पूरी करें. Now governments through history have done multiple things. One, they've used force. फोर्स किसके लिए यूज की? ताकि मनी और इंडिविजुअल्स को कंट्रोल किया जाए. मनी नॉट इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड बट रिसोर्सेज, बिकॉज कंट्री के पास आपके नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, आपका लैंड होगा, आपके मिनरल्स होंगे, आपके ऑयल रिजर्व्स होंगे. सो हिस्टोरिकली गवर्नमेंट्स के पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं अपने सिटीजन्स को बेसिकली उनको
काबू करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए. One, you can manage your people. A government can manage its citizens through force, whereby you're forcefully asking people to do things, right? Generally, जब आप communism वगैरह की बात करें, that's what that is. Second is use manipulation to make the common believe that his interests are at the top of the list. The second way that the government can control his people is through lying and through manipulation, whereby you tell the people and the citizens that whatever is being done, it is in the interest of the country, it is in the interest of the society, and it is in the interest of you. But actually, behind their back, what you're doing is just filling up your pockets, and you're not benefiting the common man, you're not benefiting the general public, you're not benefiting the society. The third thing that governments can do is actually contribute to development. Governments, बहुत सारी आज भी आपको ऐसी examples मिल जाएंगी जहाँ पर governments are actually working for the development of the society, whereby the governments are actually working for the betterment of the people living in their countries, right? So government के पास multiple तरीके होते हैं, force भी use कर सकते हैं, manipulation भी use कर सकते हैं, and governments who are really sincere can actually contribute towards the development of the country. What the government has contributed, चाहे वो force use करे या manipulative techniques use करें या actually contribute करें, तीनों actions dependent होते हैं based on the government's values, the vision and the strategy. Whatever the government thinks, whatever the government feels, और then उस thinking की basis पर, उस vision की base पर, उस value की base पर जो government strategies बनाती है और then again उनको implement करती है, they are the ones which make a difference with respect to if the government is forcefully handling their people, if the government is manipulating their own people, or if the government is actually contributing towards the development of its own people. The concept of public and private partnership has to be debated. Now this, at this point in time, what is important is कि हमको ये तो समझ में आता है कि जी government का role बहुत important है. When the government is going to realize कि CSR important है, तभी आपकी सारे institutions are going to realize it. Remember, I think in chapter number 2 or 3, we talked about the United Kingdom government जहाँ पर उन्होंने law pass किया which made CSR an integral part of every business operation. Now when the government is serious about CSR, automatically आपकी जो organizations हैं, आपके जो businesses हैं, आपकी जो firms हैं, they're also going to be serious about CSR. और government की CSR activities जो हैं वो directly dependent होती हैं on the government's vision, on the government's values and on the government's strategies as well. अगर government committed होगी CSR की तरफ, automatically आपकी companies जो हैं वो भी committed होंगी corporate social responsibility की तरफ. Again, now having said that, इस point in time पर आपका public private partnership का concept बहुत important हो जाता है, because when your private sector is joining hands with your public sector, and when your government is coordinating and collaborating with your business or with your market or with your organizations, then it becomes a win-win situation for all. Because हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कहना कि government alone can fully understand and comprehend and can work alone for the betterment of a society, that can't happen, because government के पास इतना, the government does not have those many resources. तो जब हमने ये कह दिया था कि जी government अकेले society की benefit के लिए काम नहीं कर सकती, तो फिर that meant कि हमने vacuum create कर दिया कि एक और entity होनी चाहिए. That entity are the businesses, that entity are the corporations that we've been talking about. And when I say public-private partnership, that's the nexus that I'm talking about. That's a collaboration that I'm talking about. That the public sector or the government has to join hands with the private sector so that a win-win situation is created. Win-win situation कैसे? Because government और businesses जब hand in hand collaborate कर initiatives लेंगे, then it is going to be better for the economy, because the economy is going to improve, it is going to be better for the society, and automatically it's going to be better for the politics as well. So that is what we mean कि जी आपकी public private partnerships बहुत होनी चाहिए for corporate social responsibility initiatives. The concept of virtue of the market has faded when we are faced with consequences of progress. So virtue of the market basically is कि जी whatever things or whatever activities are being done, they should be in the best interest of the market.
अगेन जब बेस्ट इंटरेस्ट की ऑफ द मार्केट की बात करेंगे उसमें आप इक्वल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की भी बात करेंगे, उसमें आप ये भी बात करेंगे कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बने, उसमें आप ये भी बात करेंगे कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी रीजनेबल और एडिक्वेट हो, उसमें आप ये बात करेंगे कि आप अनएथिकल एडवर्टाइजिंग की तरफ ना जा सकें, उसमें आप ये बात करेंगे कि आपकी पैकेजिंग भी सेफ हो. सो दीज आर ऑल द वर्च्यूज ऑफ द मार्केट वेयर बाय whatever is coming into the market, everybody who's associated with the market benefits from that. However, does that really happen? Is it कि जो आप एड्स देखते हैं वो सब चीज़ें वैसे ही आपको मिलती हैं? क्या आप श्योर हैं कि जो जूस आप पी रहे हैं उसमें जो क्वालिटी है या उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो बिल्कुल सही हैं? नहीं, you're not sure and I'm not sure as well. Why? Because जो प्रोग्रेस की कॉन्सिक्वेंस है, प्रोग्रेस इज बेसिकली टू मूव फॉरवर्ड, to get things more effectively done, to get things more efficiently done. That is what progress is. Now, whenever we are talking about progress, automatically आपको कहीं ना कहीं given or taken करना पड़ता है. You give things to take things, right? And generally जब आप giving and taking की बात करते हैं, it is the virtue of the market which is generally compromised. So जब आप कहते हैं कि जो market should be in the benefit for everybody, for all stakeholders entities, लेकिन जब आप progress की एक साइड पर आप virtue of the market की बात करते हैं, दूसरी साइड पर आप business progress की बात करते हैं, then automatically the progress takes over the virtue and the virtue fades away. The virtue of the market goes at the background, and all what these corporations are concerned with is profit making, revenue making, getting raw material for as little as possible. तो आपकी quality भी compromise हो जाएगी, and so on and so forth. Question is, why has the market failed to deliver? That's the big question that one needs to ask. कि जी what has happened? Market की जब आप बात करते हैं, the market is supposed to keep a balance. Market is supposed to ensure demand and supply. Market is supposed to ensure कि जी अगर quality अच्छी नहीं है तो demand reduce हो जाएगी, automatically suppliers को signal जाएगा कि जी quality improve करो, बेहतर करो. Where have we gone wrong? Why has the market failed to deliver? Now, the answer to that is, that's a question that we need to answer. कि जी क्या हो गया मार्केट को, क्या प्रॉब्लम हो गई मार्केट को? And maybe the answer lies within us. आप जो greed की बात करते हैं, all organizations would want to have raw material at the cheapest possible rate. अब जितना वो रेट कम कराएंगे ऑटोमेटिकली उतनी क्वालिटी अफेक्ट होगी, जितनी क्वालिटी अफेक्ट होगी ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की एंड क्वालिटी अफेक्ट होगी. सो आपका ऑटोमेटिकली एक पूरा प्रोसेस में चीज चली जाती है. रॉ मटेरियल गंदा आएगा बिकॉज यू वांटेड टू पे लेस फॉर द रॉ मटेरियल, ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी एंड में वो भी खराब होगी, वो भी अच्छी नहीं बनेगी. सो दैट्स द रीजन. आप इंडिविजुअल्स टुडे आर मोर कंसर्न्ड विद सेविंग मनी. इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस टुडे आर मोर कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस. दे आर मोर कंसर्न्ड, दे आर नॉट कंसर्न्ड कि जी क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर को देनी है. दे आर नॉट कंसर्न्ड विद कि जी हमने कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फुलफिल करना है. दे आर मोर कंसर्न्ड कि हमने कितना प्रॉफिट बनाना है. और जब ये कंसर्न आ जाएगी, these are the reasons that the market has failed, because market खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती. It's people like you and me who are running the markets, who are managing the markets. और जब मुझ में और आप में greed और the concept of making as much money as possible, ये सब चीजें आ जाएंगी, ethics हमारी खत्म हो जाएंगी, moral standards हमारे जमीन को टच करेंगे, तो automatically the market will fail you. The market will not work. All humans are basically good and believe in collectivist living. Now, having said that, let's come to a positive point. Positive point इस discussion में ये कि जी मैं और आप as an individuals, when we were born, we were not born greedy. Right? हम as individuals we're good people, human beings, everybody, whichever country we're talking about, whichever race we're discussing, हम कहीं की भी किसी भी human being को उठा लेंगे. Every person who's born is basically good, innately nice, right? And हम एक collectivist living पर believe करते हैं, हम मिलजुल कर रहने पर believe करते हैं. That's why हमारी communities बनती हैं. Now, things like आपके जो festivals होते हैं, आपकी marriages होती हैं, आपके religious festivals होते हैं, वो क्यों होते हैं? Why do we all converge on Eid? Everybody wants to meet everybody else. Christmas की बात कर लें. Why is it कि जी it's a festive season whereby everybody comes together, sings, buys presents for the family? क्यों? Because हम generally अच्छे लोग हैं. फिर क्वेश्चन ये आता है कि भी देन व्हाई द डिवाइड? अगर हम अच्छे हैं
तो फिर रिच एंड पुअर के बीच में डिवाइड क्यों आ गई, हैव और हैव नॉट्स के बीच में गैप क्यों बढ़ गया? बिकॉज हम तो अच्छे हैं, हमको तो सबके साथ अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए. जो मेरी वेल्थ है, आई शुड ऑटोमेटिकली शेयर इट विद सो मेनी पीपल हु डू नॉट हैव द सेम प्रिविलेजेस एज आई हैव. नाउ ये चीजें क्यों हुई? अगेन बिकॉज ऑफ आर jealousy, बिकॉज ऑफ आर greed, बिकॉज ऑफ us wanting to have as much as possible, because of us wanting to have more and more and more of money. Having our own mechanism failed us by creating unethical negative emotions like greed, hatred and jealousy. And that's what I was coming to. कि अगर आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है as to why the market has failed us, या आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है as to why the divide between the rich and the poor is increasing, the answer to both these questions basically is that it is because of our negative, unethical emotions like hatred, jealousy and greed, we have become what we've become today. हमारी मार्केट ने हमको इसलिए फेल किया because of jealousy, hatred and greed. हमारे हैव और हैव नॉट्स के बीच में क्यों डिफरेंस आया, क्यों गैप बढ़ा? बिकॉज ऑफ हेट्रेड, जेलसी एंड ग्रीड. बिकॉज आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशन डेवलप कर ली, आपने और मैंने अपने इर्द गिर्द, या कॉर्पोरेशंस हैं अपने इर्द गिर्द ऐसी एनवायरनमेंट डेवलप कर दी. एंड अगेन डोंट कंफ्यूज व्हेन आई गिव यू एग्जांपल्स कि आपने और मैंने, बिकॉज इट इज यू एंड आई हु इज मेकिंग अ कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन इज बीइंग रन बाय यू एंड मी. Corporations is being run by individuals. That's why हम corporations पर focus इतना नहीं करते. हम जब भी corporate social responsibility की बात करेंगे, हम individuals पर focus करते हैं who are running a corporation, because whatever the individual believes in, whatever values the individual is going to believe in, whatever the individual is going to think is right or wrong, is what the organization is going to believe in, because it is the people who make the organization. So जब हम coming back to the slide, हम ये बात करते हैं कि जी इंडिविजुअल नेचुरली बाय बर्थ इज अ गुड इंडिविजुअल. कोई आपको पैदा होते साथ चोर नहीं बन जाता, कोई पैदा होते साथ झूठ नहीं सीख लेता, कोई पैदा होते साथ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उसको नहीं पता होता. इट इज अ सिचुएशन विच मेक्स अस व्हाट वी आर टुडे. सिंस बाय बर्थ वी आर नाइस, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, when we look around ourselves, when we start working in corporations, then negative emotions like greed, I want as much as possible. You get one thing, then you want another thing. You get that another thing, then you want a third thing as well. आपको 100,000 हुए, आपको 200,000 चाहिए. 200,000 हुए, आपको 400,000 चाहिए. आपको 400,000 हुए, आपको 10 million चाहिए. आपके 10 million हो गए तो आपको 10 billion चाहिए. There's no end to it. And it is these emotions like greed, like wanting to more contentment का ना होना, it is these negative emotions which has led to that gap between the haves and the have-nots, which has led to the market failing us, which has led to corporations doing things only for the shareholders and the stockholders, and not for the stakeholders, and not for the communities, and not for the society. So it is that these negative emotions which have created all the negativity in the business environment that we see today. The answer may be found when we analyze the different markets in which business operates. So now we're going to have a more technical view कि जी businesses जो होते हैं या individuals जो होते हैं, why do they think in the way that they think, या जो हम कहते हैं कि जी हमने hatred, jealousy और greediness को हम क्यों फैला रहे हैं, या हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं. Because it is the markets जिन्होंने उनको प्रमोट किया है. आपकी जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स कौन सी हैं? आपकी लेबर मार्केट, आपकी कंज्यूमर मार्केट और आपकी कैपिटल मार्केट्स. एंड दीज आर द मार्केट्स इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स. बिकॉज बिजनेस, आई एम श्योर you've read this before as well or heard this before as well, businesses do not operate in a vacuum. For a business to operate, आपके एक environment होना जरूरी है. Business हवा में काम नहीं कर सकता. It cannot operate, right? So whenever a business operates, it operates in a market. Now the markets can be of three different types. It could be a capital market, it could be a labor's market, and it could be a consumer market, right? Depending on कौन कि अगर आप raw material का business करते हैं तो most probably आप capital market में होंगे. If you're into providing human resource to different organizations, most probably आप labor market में होंगे. And if you're producing goods and services, products so that they can be consumed by people, आप most probably consumer market में होंगे. And all these three markets play a very important role
and they sort of help in determining कि organization corporate social responsibility को कैसे view करेगा, या जो individuals हैं इन corporations के अंदर, जो कि इन corporations के अंदर काम कर रहे हैं, वो corporate social responsibility को कैसे view करेंगे. Now, the first thing that we're going to do is, out of the 3 markets that I've just mentioned, we're going to discuss the very first market, which is the capital market. Now, capital market basically provides basic necessities for production. So, जब हमने पहले बात की कि जी जो raw material की जो provision है, वो आपकी capital market से आती है. Now, कौन सी वो resources हैं जो कि capital market provide करती है, या कौन सी वो provisions हैं जो कि capital market provide करती है? They are in the form of land. They're in the form of finances or capital. They can be in the form of technology, and they can be in the form of raw material as well. Now, if you would just notice, when we talked about the factors of production, so आपकी capital market जो है वो basically आपके factor of production के साथ deal करती है. Land, labor, capital, entrepreneurship or knowledge, that is what your capital markets provide. So उसकी basic जो necessities या जो provisions हैं, वो आपकी factor of production की है. While participating in these markets, are the firms operating with CSR? That's a question that we can ask you. कि आपका क्या ख्याल है कि जो companies raw materials के साथ deal करती हैं, जो corporations आपके factor of production की requirement के साथ deal करती हैं, do you think that they are involved in corporate social responsibility? Think about it. Yes or no? Yes? No. The answer is no. They're not really concerned कि जी corporate social responsibility करनी है या नहीं करनी. They're not concerned with हम जो काम कर रहे हैं वो ethical है या नहीं है. They're not concerned with whatever we're doing, is it right or not. Now, the reason why they're not concerned with corporate social responsibility is because every organization which is part of the capital market is in search for cheaper and quicker sources rather than ethical sources. Because every company which is going to do business in a capital market is going to look for raw material which is of lesser price, which is cheaper, and which is which is quicker to acquire. Now, you need to see कि अगर for example, let's say कि जी हमारी paper manufacturing company है, and we also cut trees for making papers. Now, मेरे लिए ये काम करना कि मैं दरख्त को काटूं, पहले देखूंगा कौन सा दरख्त को काट सकती हूँ, कौन सा दरख्त को नहीं काट सकती, फिर ये देखूं कि अच्छा दरख्त कैसे कटेगा कि आपका जो इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो, फिर काटने के बाद मैं ये सोचूं कि एक दरख्त काटूंगी तो कितने दरख्त मैं लगाऊंगी, एंड देन ऑल्सो आई ऑल्सो थिंक दैट ओके वंस आई हैव प्लांटेड द ट्री देन आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ट्री सो दैट इट डजंट डाई और डजंट सॉर्ट ऑफ गेट्स वेस्टेड. सो मुझे उसका ख्याल भी रखना, और सारे काम करने के लिए मुझे एक्सपेंसेस चाहिए. एक्सपेंसेस का मतलब मैं अपनी कंपनी का पैसा इस्तेमाल करूंगी, पैसा इस्तेमाल होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कम होंगे. सो द इजियर और द क्विकर रूट इज कट द ट्री, टेक इट बैक टू द फैक्ट्री एंड डोंट थिंक अबाउट व्हाट आई हैव डन. दैट्स इट. मुझे दरख्त चाहिए था, मैंने दरख्त काट लिया. सो दैट इज द रीजन दैट आई हैव जस्ट गिवन यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल व्हाई कंपनीज जो कि कैपिटल मार्केट्स में इन्वॉल्व होते हैं, या बिजनेसेस जो कि कैपिटल मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर चीपर एंड क्विकर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, and they're not concerned कि जो हम काम कर रहे हैं वो ethical है या नहीं है. So when they're cutting trees, they're only concerned with okay, I need to cut tree as quickly as possible with as little money as possible and take it back to my factory. They're not concerned with the fact that they're cutting a tree is going to affect the ecosystem negatively. They're cutting a tree is going to erode land. They're cutting a tree is going to decrease the oxygen levels in the atmosphere and maybe result in so many diseases that so many people might get in the future. So generally जो आपके businesses होते हैं capital markets में, they're not concerned with ethical decision making, they're not concerned with ethical practices, they're only concerned with getting sources or getting raw material as quickly and with as little money as possible. Then the second thing that these companies who are operating in capital markets are, they're compromising on quality as well. Now you need to understand कि quality का बड़ा important aspect होता है. For example, you want to buy a cushion. आप वो कुशन मल्टीपल जगहों से खरीद सकते हैं. लोअर एंड पर आपको कुशन 100 रुपए का भी मिल जाएगा, एंड इफ यू गो टू अ हाई एंड मार्केट वहां पर आपको 5000 का भी कुशन मिलेगा. ना कुशन इन बोथ दी सिनारियो, ये एंड और ये एंड सेम है. Difference is in the quality. Maybe the cushion that you get for 100 rupees, you'll use it for one time and it's going to sort of
not be fluffy anymore. On the other hand, the cushion that you've bought for 5,000 rupees, you'll use it for another 5 years and it's going to retain its shape. That is what quality is, because whenever you're talking high quality, automatically the price is going to increase, because आप उसी में आपका raw material भी अच्छा होता है, आपकी जो मेहनत है वो भी ज़्यादा लग रही होती है, आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है, and in short the quality of that particular product is way better as compared to the quality of that product which is not being made right. लेकिन जो आपकी capital market में businesses operate करते हैं, they're compromising on quality. Now question, why would they compromise on quality? There are multiple aspects to it. You would have your suppliers of raw material right here. So बीच में आपके सप्लायर्स आ गए या आपके वो बिजनेसेस आ गए जो कि कैपिटल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं. नाउ दीज suppliers are supplying to the businesses or the companies or the corporations. Corporations को भी quicker और cheaper raw material चाहिए. जितना cheap raw material आएगा उतने उनके profit margins बढ़ेंगे. Now corporations को खुद करने के लिए suppliers automatically जो एक्सट्रैक्शन करते हैं रिसोर्सेज की, वो ऐसे तरीकों से करेंगे या ऐसे सोर्सेज से करेंगे जहाँ पे उनके कम से कम एक्सपेंसेस यूज हों. ना जब सही तरीके से चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, सही से कट नहीं होगी, देन ऑटोमेटिकली आपके आगे भी जाकर आपको इश्यूज पड़ेंगे. आपका जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी में भी इशू होंगे. आपकी क्वालिटी जो है फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 10 थ्रू एंड थ्रू कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है. So the second thing is कि जी capital markets में CSR activities क्यों नहीं होती, या companies operating in capital markets why are they not involved in ethical activities, is because quality के बड़े issues होते हैं. जैसे ही suppliers high quality product बनाना शुरू सप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है. एंड देन द कंपनी स्टार्ट्स टू क्रिब और द कंपनी स्टार्ट्स टू कंप्लेन कि जी आपने तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा दी, अब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, हाउ विल द कस्टमर बाय इट, हु विल बाय आवर प्रोडक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट्स अनदर थिंग. नेक्स्ट इज कि आपकी जब भी कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, रिसोर्स मार्केट्स की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी के इश्यूज आते हैं. फॉर एग्जाम्पल these days even पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा है चिकन का, स्पेशली जो रेगुलर डेली बेसिस पर आप चिकन खाते हैं. नाउ I don't know if you've tasted chicken that you generally get from the market, and जिसको हम ये तो शेवर होती है, and then you've tasted the देसी चिकन जो कि आपके घर में आपके रेगुलर जो आपके घर में पलती हैं, and the chickens that you जिनको आप घर की फीड देते हैं. Both of them are very different. One chicken is being raised on food that you provide at home. So the chicken goes around, eats whatever they want to eat, worms, seeds, plants, whatever, and then they grow in the regular time frame that they're supposed to grow. On the other hand, जब आप shaver की बात करते हैं, या जो chicken that you get in the market is being produced in poultry farms and they are being given feed by the owners, and उसके साथ उनको हार्मोन्स भी दिए जाते हैं और केमिकल्स भी दिए जाते हैं, which results in the chicken का जो growth cycle होता है वो reduce हो जाता है. So instead of you having a chicken in fully grown chicken in 4 months time, वो हार्मोन्स और वो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपको फुली ग्रोन चिकन 4 वीक्स में दे देते हैं. सो आपने अपना जो ग्रोथ साइकिल है वो 4 मंथ्स से 4 वीक्स पर रिड्यूस कर दिया. अब क्वेश्चन ये क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देयर इज सो मच डिमांड फॉर चिकन. अगर चिकन अपना रेगुलर ग्रोथ पैटर्न फॉलो करेगी तो आप चिकन की डिमांड को मीट नहीं कर सकते, बिकॉज the chicken is going to grow, will be fully grown after 4 months. So that means कि आपका 4 months से बहुत ज़्यादा टाइम है, and people are continuously demanding chicken. So demand को fulfill करने के लिए what you've done is you've started using growth hormones, and आपने growth hormones को use करते हुए आपने जो cycle है chicken का वो growth cycle उसको reduce कर दिया from 4 months to 4 weeks. Now once you've done that, चलो good. But what you will now see is that a lot of people have started saying, I don't know if you've heard it or not, but multiple लोगों से सुनने में आता है कि जी excessive chicken नहीं खाने चाहिए, too much hormones, बहुत सारे issues later part in life हो जाते हैं, आपको various diseases भी हो सकती हैं, बहुत multiple problems भी हो सकते हैं, and you should not go for chicken. That is the question कि when I write CSR versus productivity, you say ethically or you think about
progress and you think about productivity. क्या मैं सही तरीके से काम करूं या मैं shortcut में काम करूं? I just gave you an example for Pakistan. Let's talk about US, or any other advanced country for that matter. Vegetables. A lot of time when you go to US, आपको multiple types की vegetables मिलती हैं. एक होती है vegetable, दूसरी होती है organic vegetable. दोनों में difference क्या? The regular vegetable that you use is basically the vegetable जिसमें chemicals use नहीं होते. The organic one is the one जो proper without chemicals grow होती है. Again, question ये आता है कि जी why use chemicals for growing vegetables? Again, आपकी population इतने जल्दी बढ़ रही है कि अगर हम plants को या vegetables को regular cycle पर grow करेंगे, then that vegetable is not going to be enough to feed the millions and the billions of people that we have in the country. So now, in order to feed them, what we need to do is genetically modify करना शुरू कर दिया vegetables को. That's why you see a banana which is as big as this, or you see a watermelon which is huge, or you see strawberries which are very large because they have been genetically modified. उसमें chemicals डालते हैं, आप उनकी उसको multiple तरीकों से आप उनका जो size है वो enlarge कर देते हैं. एक एस्पेक्ट अच्छा है बिकॉज ओके आपकी प्रोडक्टिविटी आपने इंक्रीज करनी है बिकॉज यू आर सपोज टू फीड सो मेनी पीपल. अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेंगे, हाउ विल यू फीड सो मेनी पीपल? ऑन द डाउन साइड, once you're genetically enhancing flavors and you're genetically modifying vegetables, it has a negative impact as well. उससे आगे बहुत सारी diseases नहीं आ गए, ऐसी diseases आ गए जिनका पहले कभी नाम नहीं सुना था. आपके और बहुत सारे मसले, आपके health issues बहुत ज़्यादा हो गए. Why is that? Because when you are modifying what God has made, when you're modifying the natural way of growing things, automatically उसके side effects होंगे, और वो side effects is what we think in corporate social responsibility. So it becomes the responsibility of the corporations कि जब वो productivity के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छा हमने अपनी productivity increase करनी है, then they really need to think about corporate social responsibility as well. Then they also need to think about कि अच्छा मैं productivity to increase कर दूंगा, but will it harm the health of people if those people are going to use that product continuously? पाकिस्तान में वापस आते हैं. When we say chicken, for example, I don't like red meat, so I like to eat chicken, but would I sort of endanger my health because I would like to eat chicken, or would I endanger the health of my daughter or my son because I would like them to eat chicken? No. And that is what companies and corporations have to think about. A small example that came into my mind is just recently, KNN, that's a very famous chicken brand, right, in Pakistan, they gave an ad in the newspaper कि जी हमारी products में इन्होंने chemical का नाम दिया कि जी हमारी products में ये chemical use नहीं होता. Why did they do that? Because KNN believes in productivity and CSR. So KNN says whatever we are producing, they're hygienically produced, they're good quality chicken, and we're not using chemicals and we're not using hormones to grow things, right? So again, एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉरपोरेशंस के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कि वो एथिकल एक्टिविटीज़ को, CSR एक्टिविटीज़ को अमेलगमेट करें, कंबाइन करें विद प्रोडक्टिविटी. अगर वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचेंगे तब भी मसला है, बिकॉज येस दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस मिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स विच विल फीड सो मेनी पीपल, बट जब in the longer run, at some point in their lives, those people who are using those genetically modified products will have to face health issues. So that is what we need to think. It has to be, it should not be कि जी win-lose situation. अगर ethically है तो productivity कम होगी. Productivity and ethical activities, productivity and CSR activities should go hand in hand forward. Same thing is short term versus long term as well. CSR in short term is always going to be expensive because let's say कि जी अभी जो हमने एग्जांपल दी, आप वेजिटेबल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर रहे, आप चिकन्स को ग्रोथ हार्मोन्स नहीं दे रहे, उस केस में yes your chicken is going to take longer to grow, but eventually that effort of yours is going to pay you
in the longer run. So जब भी आप CSR में involve होते हैं, you're not thinking short term, you're always thinking long term. जब भी आप CSR activities करेंगे, आपका short term में आपका नुकसान हो सकता है. It might happen that for a shorter duration of time you might suffer losses, but CSR in a longer run is always going to be profitable for the company, चाहे वो उसकी monetary value हो या उसकी goodwill या non-monetary value हो. CSR should always be done keeping the long-term benefits in mind, and when I say long-term benefits, those benefits are not only for the consumers and the stakeholders, those benefits are for the company as well, in the form of profits that the company is going to make keeping or doing CSR activities and meanwhile being productive as well. So that is important, and that's the reason maybe that when we say कि जी corporate social responsibility is not a one time activity, शायद इसीलिए, because अगर वो one time activity होगी तो वो short term होगी, और अगर short term होगी तो वो expensive होगी, and that's why we say कि जी corporate social responsibility is an ongoing activity which is for a very long period of time, because जब आप उसको लंबे अरसे के लिए करते हैं, it is then that corporate social responsibility starts becoming profitable for a corporation or a company. Firms may use CSR to keep government regulations away, and at the end of it, actually, a lot of companies are using corporate social responsibility to curb or to ensure कि जी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है. जो हमने पिछली स्लाइड में बात की कि जी गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना चाहिए, या जो हमने आपको एग्जांपल दी थी कि जी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को इंटेग्रल पार्ट बना दिया है कॉर्पोरेशंस का. Lot of corporations would then need to ensure that they comply with corporate social activities, because they do not want the government regulations to adversely affect them. So that is how आपकी corporate social responsibility जो होती है वो बहुत ज़्यादा important हो जाती है, and that is how the government plays a very very important role with respect to कि जी companies जो हैं वो कितनी comply करती हैं आपकी corporate social responsibility behavior से. So just a quick recap before I end my lecture for today. What we're doing in this particular lecture is we're just discussing chapter number 4, and we're discussing कि जी आपके what are the various institutions who play a very very important role in corporate social responsibility. Before we started talking about the institution, we generally said कि जी you need to realize that everybody, each one of us is born good. हम में से कोई बुरा पैदा नहीं होता है. Each one of us is a good human being when we are born. However, it is the negative emotions like greed, like hatred, like jealousy, which has made what we are today. It is because of these negative emotions that markets are not being fair. It is because of these negative emotions that the gap between the haves and the have-nots has increased. Now, in negative emotions को जो individuals के अंदर होते हैं उनको curb कैसे करते हैं? That is where the role of institutions comes into the forefront. That is where the institutions play a very very important role. Institutions कौन से हैं? आपके government agencies हैं, आपके non-government या not-for-profit organizations हैं, आपके educational institutions हैं, और आपके media है. गवर्नमेंट का हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट की हम बात कर चुके. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू कोर्सेज लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, और मीडिया ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ वॉच डॉग ओवर एवरीबडी एल्स के वो, एंड इट हैज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन देयर हैंड टू सी कि अच्छा कौन कैसी एक्टिविटीज कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा. जब आप रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं स्पेसिफिकली कि जी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव्स पर, देन दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड यू नीड टू सी कि जी गवर्नमेंट जो है वो ऐसी रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे कोड्स बनाती है which ensures that the company remains on the right path, which ensures that the company stays committed to ethical activities, which ensures that the company stays committed to corporate social responsibility initiatives. However, हमने ये भी कहा कि जी corporations के लिए इतना आसान काम नहीं है सीधे रास्ते पर जाना है. Corporations के लिए it is easier for me to say that the corporations should involve themselves in corporate social responsibility initiatives. It is easier for me to say that, but it becomes very difficult for corporations to do ethical activities. फिर क्वेश्चन आता है क्यों भाई, क्या ऐसा हो गया? That is where we're talking about markets. That is where we're discussing कि जी
डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बिजनेस किस मार्केट में है, कैपिटल मार्केट में है, लेबर मार्केट में है या कंज्यूमर मार्केट में है, आपके इनिशिएटिव्स फर्क हो सकते हैं, आपके रिस्पॉन्सेज विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्क हो सकते हैं। और उसमें हम आखिरी स्लाइड में कैपिटल मार्केट्स को डिस्कस कर रहे थे एंड वी सेड कि जी कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, दे आर द वंस व्हिच आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, द necessities in the form of technology, in the form of capital, in the form of money, in the form of raw material. And then we ask this question, do you think that companies or organizations which are part of capital markets, can they be or can they operate with corporate social responsibility? And then we said कि बहुत मुश्किल हो जाता है. A lot of companies who are operating in capital markets are not doing ethical activities because they're more concerned with productivity, because they're more concerned with getting quicker and cheaper products and not getting or not using or not utilizing ethical resources. They're more concerned with productivity and less concerned with corporate social responsibility because of the reasons कि उनको जल्दी जल्दी कम पैसों पर चीज़ चाहिए होती है, and they're looking for short-term profits and they're not looking for long-term gains. So these were the reasons जिसकी वजह से आपकी जो capital markets में जो companies काम करती हैं, they're not being very they're not being very proactive towards being socially responsible companies, or they're not being very proactive towards being ethically responsible companies. We're going to end our lecture number 12 right here. And inshallah, when I meet you next time for lecture number 13, that's where we're going to start where we've ended today. So till next time, Allah Hafiz.